Hello friends, welcome to our channel Center for Sociology and welcome to our these sociology classes, dear friend, where we have been discussing certain important issues related to sociology optional, dear friend. And in today's section, dear friend, we are going to discuss one very contemporary issue that has been in news repeatedly, dear friend. That is a special intensive review of voter list that is going on in Bihar by Election Commission of India. What exactly is that? What is the purpose of that exercise? That you would have studied in GS classes also. But in this class, dear friend, we will try to look into that entire exercise, not just from the perspective of a bureaucratic exercise, not just from the perspective of a routine administrative exercise, but from the perspective of sociology, dear friend. As we have been repeatedly arguing that whatever happens in society, there exists some sociology behind that. So इस SIR के पीछे क्या sociology है, that we will try to see in this particular session, dear friend. But session start करने से पहले थोड़ी सी basic information मेरे बारे में दोस्तों. My name is Pankaj Shukla and I have been teaching sociology optional since last more than 1 decade. And as an aspirant, if you have any doubt, any queries related to sociology optional, dear friend, you can reach out to me through these social media platform. And whatever doubts you have, dear friend, you can discuss with me, dear friend. Now let's start with this issue, which is an issue of current affairs, dear friend, an issue on which lots of debate, lots of discussion is going on. And very recently, Supreme Court, they have said that if anything goes wrong in this entire SIR exercise, a special intensive revision exercise in Bihar, so they are saying that if any illegality is found, then entire exercise will be struck down. So as a routine administrative exercise, as a routine bureaucratic exercise, this special intensive review has certain significance. But as a student of sociology, we will try to see that what exactly is underlying sociological analysis behind such a special intensive review of voter list in Bihar that is going on. So if you look from your syllabus perspective, dear friend, in your syllabus, in paper 1, dear friend, there is a unit politics and society. There is a unit stratification and mobility. Similarly, here in paper 2 also, politics and society in India, social movements in India and population dynamics. So this particular issue, dear friend, it touches each and every aspect of these units that you are able to see on this screen, dear friend. हम जानने की कोशिश करते हैं कि देखिए कैसे ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू एक्सरसाइज है, it has some sociological connotation, it has some sociological relevance. You can write from sociological lens, dear friend, in your examination if this issue is asked, dear friend. देखिए किसी भी डेमोक्रेसी में fair elections are must, dear friend. So democracy is not just about elections. Democracy is about fair elections. And in such fair elections, dear friend, as many electorate as possible, they must participate. So more and more people, they will participate. It gives legitimacy to what? Elections. So any such electoral role, it must be inclusive, dear friend. As inclusive as possible. Rich हैं, poor हैं, educated हैं, uneducated हैं, majority community, minority community, this caste, that caste, as far as possible, your electoral role must be as inclusive as possible. So देखिए उस context में हम जानने की कोशिश करते हैं कि देखिए if in any democracy fair elections are must, dear friend. So fairness of election in context of India, भारत में इस इलेक्शंस की फेयरनेस को इंश्योर करने के लिए आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, डियर फ्रेंड, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू कर रहे हैं एज अ रैशनल लीगल अथॉरिटी, सो इलेक्शन कमीशन अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, इट रिप्रेजेंट अ रैशनल लीगल अथॉरिटी, डियर फ्रेंड. इफ दे ऑर्गेनाइज दिस इंटायर एक्सरसाइज in a transparent manner, in a neutral manner, in an unbiased manner, then legitimacy of these elections will increase, dear friend. Definitely it will increase the legitimacy of what? Elections, because Election Commission of India, they have the responsibility to ensure neutrality and legitimacy of election. तो अगर sociology के perspective से देखें तो Max Weber was saying that these rational legal institutions, dear friend, they are the order of the modern day society. So any transparency in spatial intensive review, dear friend, it will 100% improve strengthening in legitimacy of the state institution.
तो लोगों का थोड़ा बहुत डाउट है. वेरी ऑफन अपोजिशन पार्टीज दे आर्ग्यू about neutrality of election commission of India, dear friend. So if there will be transparency, if you are removing the name of certain voters, then you should give some reason, dear friend. If you are giving reasons behind deleting these names, definitely there will be transparency in these special intensive review, and that will strengthen the legitimacy and authority of these institutions like election commission of India. दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि देखिए किसी भी डेमोक्रेसी में जो इलेक्शंस होते हैं दोस्तों, उनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों. इलेक्शंस दे गिव अ सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, एंड द मोर एंड मोर पीपल दे हैव अ सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, बिकॉज पीपल दे मस्ट हैव दिस राइट दैट दे हैव राइट. सो यू शुड हैव राइट टू हैव राइट इन डेमोक्रेसी. सो दिस स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, इफ दिस इंटायर ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज it is organized in an impartial manner, in a neutral manner, definitely, dear friend, it will increase the trust of the people. But if there will be lack of trust, if people belonging to certain communities, certain caste groups, especially from marginalized section, minority group, they have this sense that they are being excluded, then there will be lack of trust. And such a lack of trust, dear friend, it may create a normlessness or a sense of enemy, dear friend. Here, leader of opposition keep on arguing about that thing. Then conflict perspective says, देखिए conflict perspective हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया. देखिए conflict perspective बोल रहे हैं कि देखिए ये जो इलेक्टोरल रूल्स हैं ये न्यूट्रल नहीं है दोस्तों, और जब इनका स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू हो रहा है तो हो सकता है कि पार्टीज दैट आर इन पावर एंड पार्टीज दे आर इन अपोजिशन. इन मॉडर्न डे डेमोक्रेसीज देयर इज अ पॉलिटिक्स ऑफ वोट बैंक, डियर फ्रेंड. हमने आपके साथ पहले डिस्कस किया. और वोट बैंक पॉलिटिक्स में कई बार पार्टीज को पता होता है कि इस मल्टी कॉर्नर इलेक्शन में, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में, दीज आर देयर वोट बैंक. एंड इन स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, इफ दोज हु आर फेवरेबल टू रूलिंग पार्टी, देयर नेम्स आर इंक्लूडेड, और दोज हु आर अनफेवरेबल टू रूलिंग पार्टी, देयर नेम्स आर एक्सक्लूडेड. इफ इट हैपेंस, देन इट मे क्रिएट ए पावर टसल, a power struggle between ruling party and opposition party. And therefore, dear friend, transparency and fairness in special intensive review is very important from sociological perspective. हमने आपके साथ ये भी डिस्कस किया कि देखिए सोशियोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रैटिफिकेशन, डियर फ्रेंड, और उस स्ट्रैटिफिकेशन की अलग अलग डायमेंशंस हैं दोस्तों. कास्ट एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, जेंडर एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में. और अगर बिहार की सोसाइटी को आप देखें तो दोस्तों, अगर सोशियोलॉजिकली अगर आप उसे असेस करें तो आप पाएंगे कि जो बिहार में जो सोसाइटी है, इट इज हायरार्किकली ऑर्गेनाइज्ड एट द ग्रासरूट लेवल, डियर फ्रेंड. बहुत सारी डायमेंशंस हैं, कास्ट, क्लास, जेंडर हायरार्की के डायमेंशंस हैं. सो इफ नेम्स आर दोस दैट आर बीइंग एक्सक्लूडेड, दे आर फ्रॉम वीकर सेक्शन, डियर फ्रेंड, माइनॉरिटी सेक्शन, ट्रेडिशनली लोअर कास्ट सेक्शन, then there will be a sense of marginalization. But if these names, those who are migrants, those who are from minorities, those who are from socially and educationally backward, their names will be included. It will give them a sense of participation. It will give them a sense of empowerment. So I hope that you can analyze this special intensive review from the perspective of stratification, inclusion, exclusion, legitimacy, anomie. So these are certain sociological concepts that you can relate with this special intensive review exercise that is going on in Bihar. और देखिए अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, और 2026 में आप अपना मेंस लिखना चाहते हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ, सो वी एट एनालिटिक्स IS आर गोइंग टू लॉन्च न्यू फाउंडेशन बैच फ्रॉम 20th ऑफ दिस मंथ, डियर फ्रेंड. इसको लेकर अगर आपके कोई भी डाउट है तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं. Thank you to all for joining me in first take with me, dear friend.